So good evening and welcome to the Divine Healing Valley, Spirituality and Healing Meet. And we are in the Spirituality and Healing Meet session, Wednesday session, which is today we are following the universal laws. And today the agenda is for discussion on universal law of Dharma. Yes, all of you saw that? All of you saw that in the post? Yes, so I would welcome all the regular members and the guests here. So Minuji, welcome and be part of the session. And whenever you feel like, you can share your views on the discussion. Yes, before we get on with the agenda for today, the law of Dharma, let's have some people share from their experiences or their benefits that they have got from the earlier sessions. So far we have done many universal laws, universal law of being, law of giving and receiving, law of karma, law of least effort, law of detachment. Yeah. So all these laws we have covered, and now we are in a culmination of all the universal laws in the form of law of Dharma. Yes, Smriti ji, you want to share something? Yes, go ahead. Yes, sir, I have been going through these meetings and practicing things with you since almost 1.5, 2 years now. And be it a law of detachment, be it mindfulness, I would say कि it has actually changed my life. पहले जब आप बताते थे, I used to listen कि हाँ, जब आपका मन शांत होता है तो सब कुछ आपको आपके हिसाब से दिखाई देता है, बट प्रैक्टिकली आई कैन सी दैट. एंड नॉट ओनली, आई वुड लाइक टू शेयर कि कभी जैसे मैं अपना ध्यान लगा के बैठी भी हूँ तो मैं बैठे बैठे पता नहीं कहाँ कहाँ घूम फिर कर आ जाती हूँ, एंड आई डू नॉट इवन रियलाइज इट. And as far as detachment is concerned, yes, my bond has actually become more stronger by getting detached to all the things around me. So that's what I wanted to share. Absolutely perfect. Wonderful, wonderful sharing, Smriti ji, and wonderful sharing by all the participants here. And one thing very beautifully said by Smriti ji is that the moment you get detached to the world around you, which means बाहर की दुनिया से अगर जैसे ही आप डिटैच होते हैं, बाहर की दुनिया में क्या है, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, राइट? And the moment you get detached from that, you actually experience unconditional love for people and life. And that is what she is sharing. That is why such a shift in the way of being and the kind of transformation in the life, right? Wonderful, great. Anybody else who would like to share? Shashi, just I would like to say that what Smriti said, the powerful word. The moment she got detached, she started getting better, feeling better bonding with everything and everybody. That's the power of detachment. Congratulations, Smriti. Absolutely. And in fact, the last 3 sessions we have been doing on law of detachment. So people who have not attended the session, or if you just come for this session today, like Meenu, तो आप वो recording YouTube में देख सकते हैं मेरे channel पे, and I can also share that. And you will find that the law of detachment, in fact, that these 3 sessions were the most powerful ones, I suppose, because it actually, I experienced a tremendous shift in the law of detachment to many things in my life, which I could not see before. So very, very small aspects of life, you know, where you get attached and you are not even aware of it. The problem is when you get attached, you don't know, everybody else know it, right? So the idea is to do a lot of introspection and get to the things that are actually holding you back. जैसे ही आपको वहां से freedom मिलती है, it is like, you know, you want to shout to the whole universe, I am free, I am free, I am free, kind of a thing. So, and you actually see that in all your actions. Wonderful. Great, Sanjeev. That was a good summarization. Yes, anybody else? And I would request all of you to switch on your video so that we can connect, huh? So Rajiv Ranjan ji has also shared a lot about his transformation in journey in peace of mind. And Tony, of course, has got his whole life transformed. So we all know that, yes. Yes, anybody else who would like to share? Otherwise, we get on with the... Yes, Leslie, you're on mute. Yeah, okay. Can you hear me? Yes, yes. Okay. The biggest thing that I actually, well, I've been on this spiritual journey for a very, very long time. And the only thing is I discovered that even though you may be on a journey for so long, yet there's so many hidden designs of yours, which, you know, like keep coming up, and you have to keep discovering them and letting go of them. The biggest thing that I actually discovered was you don't need to, you know, get detached from the world
You don't need to get detached from the vastu or the people and all, because the entire world is you. And if you actually get detached from yourself, you actually get detached from the entire world. So definitely that's where the power comes in. So this is what I discovered. I was holding on to a design which I completely did not even know it was there in my subconscious mind. I shared it with Shashi individually, but I'm going to share it out here on the group. So people definitely would like to take a benefit out of it. Is when I was very young, somewhere around, like 14, 15 years, and my mother used to keep up very unwell, and she had a lot of complaints regarding her relationships and all those things. So she, like, because of that, there was a very unhappy family life that I used to experience. So I used to always spend a lot of time outside my home. And due to that, she also started keeping unwell. And, like, for the last years of her life, she died pretty young at the age of 50. And last years of her life, we used to keep traveling to one hospital or the other. And that suffering, that whole thing, as a child, I was grabbing on, and, I was literally resisting, and I used to hate it. So I did not know. I thought when she went away and I was on my spiritual journey, I've completed and I've gone ahead of all this thing and accepted. But any of my relationships, especially regarding my relationship with my wife, whenever she used to be unwell, or, she had issues and all those things, instead of listening, I used to majorly resist, because she kind of reminded me of my mother. And I used to completely resist it, and the whole suffering was there. I used to see as if my future was bound with her. I'm going to suffer all my life. I have to go through all that stuff. And in this last, I think so, I don't know, third or fourth session, where we discovered how our parents shape up, and that's when the breakthrough came in, that I was holding that memories in my subconscious mind, and I was dealing with my wife with those memories. And that, when I got the access where the suffering was coming in, I got completely free of it. And now whatever the situation comes in, I'm completely able to deal with it freely. And not, coming from the past, rather whatever the situation at this present moment, I was able to deal with it and completely free of it. And I'm able to kind of make choices, whether whatever decisions I take, it's out of now the present moment, rather than, from the past. This is what I got. Wow, amazing. Great, Leslie, and that is, it takes a lot of courage to share from the personal life. And since you had already shared with me, I knew about the transformation part, and it was a real tough time that he was going through. And suddenly, he couldn't stop himself, and he was calling me, and then he shared the whole thing, and he was, from the tone I could see that he's free. So that is the power of detachment that I was just talking of. The moment you are detached, whichever way, Leslie, you put it, whether you are detached from yourself or from the world, the basic idea is that जैसे ही आपको पीछे से किसी ने पकड़ा हुआ और वो छूट जाएगा, तो आप फ्री हो जाओगे. जितनी जल्दी ये पकड़ सको, उतनी जल्दी आपको freedom मिलेगी, and then you will be able to enjoy your life. And that is when you get an access to unconditional love. Love is unconditional. Only thing is we don't experience it because of the attachment. एक बार attachment चली जाएगी, unconditional love को आना ही है. That is my experience of life, right? And that is exactly what Leslie also shared. You can deal with the life or the situations in life with a lot of power and freedom. Great. So we move on with the agenda for today, unless anybody else who would like to share. Anybody else who would like to share? Okay, so we move on with the agenda for today. Today, the agenda is what? Universal law of Dharma, right? Yes. So when we hear this word, universal law of Dharma, what comes to the mind? आम लैंग्वेज में हम बात करते हैं ना, तेरा धर्म क्या है, कौन से धर्म से हो, तो धर्म का एक अलग मीनिंग होता है. धर्म मीन्स राइटियसनेस, मोरालिटी. मतलब जहाँ पे एक जो भी स्ट्रॉन्ग है उसको वीक की हेल्प करने की जरूरत है, और जो पुअर है, रिच है, उसको पुअर को हेल्प करना है. So there should be peace, and we should help each other rather than just
trying to achieve everything in life. Okay, so good. See, everybody will have a perception, and that perception is real for you. It may or may not be the ultimate truth. We will see that. Okay. So when you say स्मृति जी जो भी आपने शेयर किया, आपके लिए धर्म की डेफिनेशन वो है absolutely perfect, and there is nothing right, nothing wrong. So righteousness है, लेकिन उसमें आपने दो चीजें बोली दो चीजें बोली जो मैंने सुनी rather. So I would like to distinguish that. जरूरी है बोला और एक should बोला. तो इन दोनों को हटाना पड़ेगा तो धर्म की डेफिनेशन और अच्छी बनेगी. कोई भी चीज जरूरी नहीं है, कोई भी चीज सही या गलत नहीं है, और कोई भी चीज शुड या शुड नॉट नहीं है. ओके, उसके बाद अगर दोबारा रिडिफाइन करेंगे तो धर्म की अच्छी डेफिनेशन बनेगी. सो दैट इज हर परसेप्शन. सो आई अप्रिशिएट दैट एंड आई एक्नॉलेज दैट. वेरी गुड. यस, एनीबॉडी एल्स? धर्म की डेफिनेशन क्या है आपके हिसाब से? धर्म क्या है? एनीबॉडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? And people with whom I have discussed before, they can also share. So we can have a discussion. That's not a problem. Because in some other program, I think we have already discussed this. And for those who are not aware, we have a Vedanta Wisdom program which comes on Saturday, which is a paid program. And also we have a Healers program which is coming up on Sunday. In fact, both the batches are starting in February. Yeah, it's a different context, but we have covered a few topics here and there. Yes, anybody who would like to share? What is Dharma? Yes, Tony, go ahead. I think anything that is not on the path of adharma is supposed to be dharma. ये तो ऑपोजिट्स हो गए ना. धर्म और अधर्म तो अलग हो गए. जो अधर्म में नहीं है वो धर्म में है, और जो धर्म में नहीं है वो अधर्म में है. वो तो ठीक है, लेकिन धर्म है क्या? सर, हर्षित का एक वर्जन आया है. बताओ क्या बोल रहे थे आप? कुछ भी निभाना इज धर्म. कुछ भी निभाना इज धर्म. ओके, सो दैट इज इफ आई पुट इट इन राइट वर्ड, ड्यूटी. हाँ, ड्यूटी बोल रहे हो? ड्यूटी, यस, ड्यूटी कैन बी वेरी वेरी गुड, वेरी गुड. द यंगेस्ट सीकर हैज गिवन ए परफेक्ट आंसर. हाँ, द ड्यूटी. धर्म क्या है? ड्यूटी है. बिल्कुल सही. जो सोल्जर है, बॉर्डर पे है, नेशनल ड्यूटी पे है, उसका धर्म क्या है? टू फॉलो द ऑर्डर्स एंड शूट और फायर व्हाटएवर एट द बॉर्डर सर्व. So the nature of duty that you do and selfless service, this can be a very good definition of dharma, by the way. Right? Yes, very good. एक जोरदार ताली बनती है हमारे youngest speaker के लिए. Yes. Anybody else? Anybody else who would like to share? Meanwhile, welcome Anita ji and welcome Preeti ji. Videos on कर लीजिए. और अगर इको हो रहा है तो आप लोग, बैकग्राउंड नॉइज है तो म्यूट पे जाइए. Yes, who would like to share? Whatever comes to your mind. There is no right answer, there is no wrong answer. It is your perception, and we will very soon see what is the right definition. Yeah, or the right understanding, I would say. Yes. So what is dharma? Anybody else who would like to share? So let me first distinguish what is जो धर्म नहीं है. Okay. तो अगर कोई बोलता है कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, ये उनका अंडरस्टैंडिंग है धर्म का, बट दिस इज नॉट व्हाट धर्म मीन्स. दो इट हैज बीन मिसअंडरस्टूड एज रिलीजन. दो इन लूजली, इन जनरली स्पीकिंग, वी कैन से दैट इट इज रिलीजन, बट देन it is not like differentiating between a Hindu or a Muslim or a Sikh or a Isai. No, that is not there. That is not the real understanding of dharma. One definition of dharma, which we just now saw, is your duty, sense of duty, and your, you can say, sense of responsibility, right? तो क्या निभा रहे हो? अपना ड्यूटी निभाना, that can be part of your dharma. Okay, what else? और क्या आ रहा है दिमाग में? ये सर इंसानियत के पैमाने पर कोई एक रेफरेंस पॉइंट होगा सर, उसका पैमाने पे जो हमने ड्यूटीज या रेस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहे हैं उसके हिसाब से क्या सही है क्या गलत है. There should be some reference point. Okay, so I will take that. I'll take that. It is like living the values that you consider the highest. अपने highest values जो भी हैं आपकी लाइफ में, अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं without judging them as right and wrong, आपके लिए क्या जरूरी है, आप उनको फॉलो कर रहे हैं, ये आपका धर्म. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो नहीं कर रहे हैं उसको हम जज और इवैल्यूएट करें. तो राइट एंड रॉन्ग को छोड़ देते हैं. Living your highest values can be a part of your dharma. ये मेरा धर्म है, मैं इसका पालन कर रहा हूँ. Correct? Right? So that could be right. राज धर्म होता है, जैसे एक राजा है, राजा का एक धर्म है, सुना है हमने ये राज धर्म.
तो अपने राजा है तो राजा का धर्म का पालन कर रहे हैं, इंडिविजुअल धर्म कोई ऊपर आता है राजधर्म, then the individual dharma will come, correct? So that way, so people have different ways of looking at the duties or the responsibilities, which you rightly said. So that is right, it's a good definition. Yes, what else? और क्या हो सकता है धर्म? आमतौर पे हम जिसको समझते हैं, जो बुक्स में भी लिखा होगा, it is called the purpose of life. How many of you have read it? Purpose of life? Yes, purpose of life can be a good understanding of what is dharma, right? और कुछ दिमाग में आ रहा है किसी के? Whatever takes you to peace is dharma. Okay, whatever takes you to peace. So when you say peace, I will say a little bit more. See, at one point of time in this forum, I can say that we know that we are a soul. है ना? तो हमको ये understanding तो है कि we are a soul on a spiritual journey, and we are taking birth after birth after birth. So obviously the soul has a purpose. So that purpose of life will be the ultimate purpose of life, or a one general purpose of life for all human beings. जैसे हर जीव का एक particular design है, right? For example, if I say, what is the basic intrinsic nature of one particular life form? That is the dharma of that life form. For example, birds are designed in such a way that they fly. Basic design है उनका. तो एक basic nature हम exhibit करते हैं अपने life form में. जैसे birds का flying है, fishes का swimming है, right? So there is a particular way a life form is designed to function. This is called dharma. तो अपना basic intrinsic nature को पहचानना और उसको express करना. That is one purpose which will be common to all human beings. और वो क्या होगा? हमारा basic nature क्या है? Soul अगर हम हैं तो हमारी ultimate purpose of life क्या है? Self realization. So going towards moksha is the ultimate purpose of life. So that can be the dharma of a soul. तो soul purpose क्या है? Attaining self realization. So when you say peace, I take it as moksha, ultimate peace, ultimate level of love, peace and happiness or bliss. तो जो हमारा basic nature है, which we can call as सत चित आनंद, परमात्मा को सच्चित आनंद बोलते हैं, तो soul का भी nature वही होगा ना. Soul and परमात्मा दोनों का nature तो एक ही है. तो सत चित आनंद अगर हमारा nature है to experience and express this basic nature of सत चित आनंद in whatever we are doing, that will be the purpose of life. How many of you can connect? Okay. तो जैसे हर जीव फॉर्म का एक पर्टिकुलर डिजाइन है, हमारा भी एक डिजाइन है, हर ह्यूमन बीइंग का एक डिजाइन है. तो एवरी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट हैव ए डिफरेंट पर्पस ऑफ लाइफ. एक पर्पस ऑफ लाइफ तो कॉमन ही होगा ना सबका. एज अ सोल, our purpose of life is to attain self realization or attain or go to moksha, attain moksha, right? Now comes the twist. Twist क्या है? All human beings have a choice. हमारी awareness अलग अलग है, हमारी choice अलग अलग है. क्यों है अलग अलग? अगर मैं पूछूं तो क्या जवाब देंगे? मालूम है हमको अलग है. क्यों अलग है? Why each human being behaves differently? जबकि हमारा डिजाइन सेम है, जबकि सारे बर्ड्स जो हैं अगर बेसिक नेचर देखें सबका सही है, सबका सेम है. ऑफ कोर्स उनकी कैटेगरी थोड़ी सी होगी, चील का अलग होगा, कौवे का अलग होगा, अलग है, बट बेसिकली सारे कौवे तो एक जैसे ही हैं ना, सारे हाथी एक जैसे ही हैं, सारे शेर एक जैसे ही हैं, सारी गाय एक जैसी ही हैं. तो सारे ह्यूमन बीइंग्स एक जैसे क्यों नहीं है? क्या जवाब है? क्या जवाब है? फ्री विल. फ्री विल, यस. अवेयरनेस एंड विल, फ्रीडम है हमारे पास, फ्रीडम ऑफ चॉइस है ना, फ्री विल है हमारे पास. और दूसरी, एक्सपीरियंस सबका अलग है, सबकी इंटरप्रिटेशन हर चीज के लिए अलग है. सो द वे दे एक्सपीरियंस, दे व्हाटएवर दे हैव गॉट इज दे रिएक्ट. जो भी जिस तरह से सोल ने एक्सपीरियंस किया है उस चीज को जिस तरह से इंटरप्रेट किया है उस तरह से ही सोल रिएक्ट करेगी. सो एवरी ह्यूमन बीइंग रिएक्ट्स डिफरेंटली क्योंकि उनके एक्सपीरियंसेस आर डिफरेंट. Yes. So let me now reframe my question. Why do they react differently? Their vasanas, previous births,
previous choices. Yes, good. So previous birth, एक सोल कब से है जर्नी पे? इस बॉडी में हम 70-80 साल से हो सकते हैं, राइट? इससे पहले, उससे पहले, उससे पहले. If you believe, whether you believe it or not, if you understand the basic idea of rebirth, a soul is at least 5000 years old. We can say that all of us are. अगर हम अपनी एज पूछें, इस लाइफ फॉर्म को छोड़ दें, मे बी 30 years, 40 years, 50 years, whatever it is in this lifetime. सोल का एज क्या है? You don't know actually, but you can approximately believe that it should be around 5000 years. अगर अभी भी आप टिके हुए हैं, खेल रहे हैं, मोक्ष नहीं मिला है, तो कम से कम 5000 साल से आप तपस्या करके आ रहे हैं. हाँ, तो ऑब्वियसली आपके वासना, जैसे अभी बोला, आपके संस्कार अलग अलग हैं, आपके कर्म अलग अलग हैं, जिसकी वजह से आपके अवेयरनेस और आपके चॉइसेस अलग अलग हैं. टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो मैं ये बोलूंगा, हमारा शरीर जो 5 तत्वों से बना हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ इस जीवात्मा की कुछ क्वालिटीज हैं, कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं, है कि नहीं? गुण क्या हैं? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण. दोष क्या हैं? 3 दोष हैं हमारे, आयुर्वेद में डिफाइंड है, वात, पित्त और कफ. तो बॉडी का स्ट्रक्चर अलग अलग है और माइंड की कंपोजिशन अलग अलग है. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे 800 करोड़ लोग, इंसान अलग अलग बने हुए हैं. सबके अवेयरनेस अलग है, सबके परसेप्शन अलग है, लेकिन अल्टीमेट जर्नी सबकी एक ही है, सेल्फ रियलाइजेशन. तो देयर इज वन कॉमन पर्पस, अल्टीमेटली सेल्फ रियलाइजेशन मिलना ही है. इसी जर्नी पे हम लोग बढ़ रहे हैं. सोल की जर्नी वही है. मेकिंग सेंस? सर थोड़ा दोष को एक्सप्लेन कीजिए. दोष को एक्सप्लेन करूं? ओके, तो अभी गुण को पकड़ते हैं, दोष को छोड़ दीजिए क्योंकि वो बॉडी स्ट्रक्चर में आता है. जैसे आयुर्वेद के हिसाब से बॉडी स्ट्रक्चर्स को डिफाइन किया हुआ है वात, पित्त और कफ में. ओके, so based on that your body structure, your physiology can be distinguished as 3 different categories. तो वो थोड़ा सा अलग डेफिनेशन हो जाएगा, बट आप सर्च कर लीजिए, गूगल सर्च में सब मिल जाएगा. ठीक है, बट हियर वी आर कंसर्न्ड अबाउट द गुणास, इफ यू आस्क मी. तो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण जो हैं, ये जर्नी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि दिस इज द जर्नी वेयर यू विल रीच टू मोक्ष. क्योंकि मोक्ष मीन्स व्हाट? निर्गुण. इन तीनों गुणों से आपको ऊपर उठना है. दैट इज व्हेन यू अटेन मोक्ष. सो दैट जर्नी इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? सो राजीव जी इसी डिस्कशन में रहते हैं अभी. ठीक है, सो विल लुक एट व्हाट वी आर लुकिंग एट इज द गुणास. बट यू अंडरस्टैंड बेसिकली अवेयरनेस अलग अलग है, फ्रीडम अलग अलग है, यानी कि फ्री विल अलग अलग है हमारी. इस वजह से कुछ लोगों की अपनी स्पेशलिटी है. अब कोई एक्टर है, जैसे अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, दे हैव एक्सेल्ड इन द फॉर्म ऑफ इन द फील्ड ऑफ एक्टिंग. सम आर क्रिकेटर्स, वो स्पोर्ट्स में एक्सेल कर रहे हैं. कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेस में एक्सेल कर रहे हैं. कोई साइंटिस्ट हैं, वो इन्वेंशंस कर रहे हैं. हर एक अपना अपना है. कोई स्पिरिचुअल हीलर है, वो हीलिंग कर रहे हैं, राइट? तो कोई लाइफ कोच है, वो लाइफ कोचिंग कर रहे हैं. तो सबने अपना अपना एक पर्पस भी ढूंढा हुआ है. क्यों? हमारी अवेयरनेस और हमारी फ्री विल के हिसाब से हमारी स्ट्रेंथ्स हैं कुछ, हमारे पैशन हैं कुछ, उस हिसाब से हमने अपना पर्पस ऑफ लाइफ डिक्लेयर किया हुआ है. Now this purpose of life is chosen by every human being individually. That is why we have an individual purpose of life. A cow doesn't have an individual purpose of life. All the cows are same. But human beings, though they have one common purpose of life, they also have an individual purpose of life. Making sense? ज़्यादा तो नहीं हो रहा है कुछ? हाँ, heavy तो नहीं हो रहा है? You can connect with it. Now we have to understand how to apply this universal law of dharma in our life. You have to understand your own nature. आपको अपना नेचर पता लगाना है, आपको अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता लगाने हैं. बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर दैट आई एम ए सोल ऑन ए लॉन्ग जर्नी. मैं एक आत्मा हूँ, बहुत लंबे सफर पे हूँ, और मैं एक कर्मों का और संस्कारों का एक बहुत बड़ा खजाना या एक बैकलॉग लेके चल रहा हूं या चल रही हूं. उसके हिसाब से मेरे चॉइसेस हैं और इस लाइफ टाइम में मैं उसी हिसाब से आगे बढ़ रहा हूं. ठीक है, तो अगर लॉ ऑफ धर्मा को हमने अप्लाई करना है, पर्पस ऑफ लाइफ को अप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? व्हाट इज माय पैशन, व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स.
So how many of you have seen that? How many of you have seen that? मेरे strengths क्या हैं? मेरा passion क्या है? What am I good at? How can I contribute to people? Because as I said, dharma also means sense of duty, your responsibility, and your selfless service, right? How can I serve humanity? This is a very big question for your purpose of life. How can I contribute to others? How can I serve humanity? That is actually the real answer of purpose of life. Okay, yeah. So somebody, if some people can share, कुछ लोग शेयर करिए ताकि मेरे को पता लगे कि आप लोग कितना समझ रहे हैं और कहाँ पे हैं. Yes. And why are the videos off? Come back. We are in an intense discussion. Got to come back. So Tony, Leslie, switch on. Shashi, I'll take just 10 minutes. I'm shifting from one place to other. Sure. Take your time. Yes. Share करिए. क्या समझ में आया अभी जो मैंने बताया? We all have unique talents and potentialities that we need to share with the world in whichever way we can. Yes. It can be by the way of healing or by the way of teaching or contributing in any way. Okay, perfect. So ये आपका individual purpose of life हो गया, ना? Which means in this lifetime क्या करेंगे आप? ठीक है ना? But ultimately एक purpose of life तो आपको मान के चलना ही है कि your ultimate aim is or the purpose of life is self-realization, which is the purpose of the soul. Right? Right. अब ये technically या theoretically तो समझ में आ जाता है, लेकिन इसकी importance क्या है? इस life form में उसकी जरूरत क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हुआ तो भी कौन सी आफत आ गई? हाँ, इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है सेल्फ रियलाइजेशन को? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन टू मी और इज इट क्लियर फॉर यू? सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करता तो क्या हो जाएगा? Then the journey will go on, the soul's journey will continue. तो ठीक है ना, 5,000 साल से 5,000 साल से हूँ, 100 साल और लग जाएंगे, अगले जन्म में करूंगा. But if we want to attain moksha, then we have to get rid of it. We have to learn our lessons. Okay. All right. So good understanding, but little bit more. थोड़ी सी और clarity चाहिए उसमें. इतना focus क्यों है self realization पे? Anybody? To improve ourselves, to get over our shortcomings. Okay. So if you improve yourself and okay, perfect. अच्छा जवाब है ये. To improve yourself on your spiritual journey and to move forward. Okay. Good. Anybody else who would like to share? Yes, Tony, go ahead. I think it is to attain freedom from the bondages and from the miseries that we are facing in our life. Very good. Very good understanding. To overcome the sufferings and the miseries in your life. That could be one path. Why you should move forward. We can, it is basically the freedom from the fear, the attachment, and the circle of this particular life, which we are going through. Okay, good. So all the answers are right, by the way. There is no, as I said, there is no right answer, there is no wrong answer. No? All the answers are right because it is true for you at that level, wherever you are. So that brings us to the topic of what is the different level of understanding for people. Each human being is at a different level of understanding, correct? So let us have a discussion on that. That will give you more clarity. Kyun zaruri hai? Okay, so let us look at a person. I will give you in the form of an example, okay? One person who feels my life is full of struggle and मेरी life का purpose है जिंदा रहना. चाहे वो बिजनेस में हो, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे को अपने कॉम्पिटिटर से मार धाड़ करके जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदा रहना है मुझे. Survival is the purpose of my life. If somebody is in that category, is his understanding great? Is that great understanding for him to take to self-realization? Just think about it. No. एक और इंसान है, वो बोलता है कि my purpose of life is pleasure. Forget about spirituality and all that. I don't believe in all that.
मेरे को तो ये भी नहीं मालूम मेरा पिछला जन्म हुआ था या अगला जन्म हुआ था, मेरे को इतना मालूम है मैं अभी हूँ जिंदा, बस मेरे को एंजॉय करनी है लाइफ। मेरा प्लेजर सेंटर है, मेरे लिए प्लेजर जरूरी हैं। सो आई एम इंटरेस्टेड इन द 3 W's. Everybody knows the 3 W's, right? Wealth, wine and women. मैं तो ऐश करूंगा, मेरे को कोई स्पिरिचुअलिटी से कोई मतलब नहीं है, सारे स्पिरिचुअल गुरु पाखंडी हैं, कर लो बात। कोई बोलता है मेरे को तो पर्पस ऑफ लाइफ, मेरा मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ वेल्थ एक्यूमुलेशन है, मैं पैसे कमाऊंगा, दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनूंगा, एंड आई विल बी द किंग, आई विल लिव लाइक ए किंग। पर्पस ऑफ लाइफ इज व्हाट? वेल्थ एक्यूमुलेशन। अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है, क्या सबकी अंडरस्टैंडिंग सही है, गलत है, क्या है? व्हाट डू यू से? 3 एग्जांपल मैंने आपको दिए, लेट्स हैव सम डिस्कशन। व्हाट डू यू से? Nothing is wrong. Nothing is wrong, nothing is right, but then yes, what is happening to them? Are they fulfilling the ultimate purpose of life, self-realization? No. Are they living a life of love, peace and happiness, freedom and joy? No. No. That is the answer. No. Why? जो सर्वाइवल में है वो फेयर में है, जो प्लेजर सेंटर में है he will, pleasures are never everlasting, right? They can't last long. जैसे प्लेजर खत्म हो जाएगा he will become desperate. Now we want the next higher level of pleasure. कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? Yes, yes. Pleasure is always fleeting, and in fact the moment you start enjoying pleasure का returns कम होने शुरू हो जाते हैं। Just take a simple example. आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है, whatever you think of a गुलाब जामुन, no? All the pleasure centers are whatever be the pleasure, whether it is wine or wealth or whatever. Take it as a गुलाब जामुन। बहुत सारे गुलाब जामुन आपके पास रखे हैं, you are very voracious eater of गुलाब जामुन। पहली बाइट लेते ही आपका diminishing returns शुरू हो जाएगा। फर्स्ट बाइट विल बी द मोस्ट डिलीशियस, सेकेंड बाइट में उसका डिलीशियस टेस्ट जो है थोड़ा सा कम हो जाएगा, and very soon excess of pleasure will result in pain. How many of you have seen that? So उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत शैलो है। जो फेयर में है वो तो भूल ही जाओ, वो तो पूरा ही फेयर में है। This entire area is called loop. Yes, जो फेयर में है वो तो फेयर में ही है, और जो पावर में इंटॉक्सिकेटेड है, मैं इस कंपनी का एमडी हूँ, मैं यहाँ का जनरल मैनेजर हूँ, मैं यहाँ का चीफ मिनिस्टर हूँ, हाँ, वो फुल ईगो में है। और जो इसने अपने आप को मान लिया है कि मैं परिवार का मुखिया हूँ, मैं कंपनी का जनरल मैनेजर हूँ, वो कब तक पावर में रहेगा? उसकी सारी पावर कब तक है? जब तक वो जनरल मैनेजर की कुर्सी पे है। कुर्सी जाने में एक दिन लगता है, कोई स्कैम में फंस गया, कोई कुछ हो गया, कुछ और हो गया, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई, कुर्सी भी गई, वो भी गया, और Power गया। नाउ व्हाट? सो दीस आर ऑल टेम्पररी थिंग्स। टेम्पररी को परमानेंट मान के अगर तुम चिपक जाओगे तो गए, अटैचमेंट हो गई, तुमको सफरिंग और मिजरी ही मिलेगी। तो इन तीनों केसेस में कहीं भी कोई पावर, फ्रीडम, लव, हैप्पीनेस एंड जॉय नहीं है। शैलो लाइफ, it will result in stress, right? अब जैसे जैसे किसी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी क्या होगा? अब जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी तो क्या होगा? There will be a shift from and he will experience freedom from suffering and misery, and this is what I relate to in the form of the 7 levels chakras of in the pranamaya kosh, which relates to 7 level of understanding. तो कोई रूट चक्रा से अगर ऑपरेट करे, everybody aware of chakras a little bit? I can mention that, everybody aware of it little? Yeah. तो अगर कोई रूट चक्रा के कॉन्शियसनेस से जी रहा है, अवेयरनेस में जी रहा है, that means हर एक की अपनी अपनी जर्नी है। अगर कोई रूट चक्रा के कॉन्शियसनेस में है, he is living in constant fear, survival is the purpose of life. तो जिसका पर्पस ऑफ लाइफ सर्वाइवल है, उसको उसी लाइफ की क्वालिटी मिलेगी ना। जो सेकल चक्र से ऑपरेट कर रहा है, उसका पर्पस ऑफ लाइफ प्लेजर है,
उसको वैसे ही लाइफ मिलेगी। अब किसी की अवेयरनेस अगर सोलर चक्रा पे है, ही इज इन पावर एंड कंट्रोल। सोलर चक्रा इज पावर एंड कंट्रोल, राइट? फुल ईगो में है, फुल ईगो में जिएगा वो, एंड व्हाट यू विल एक्सपीरियंस टोटल अटैचमेंट, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में है, राइट? अवेयरनेस कहाँ पे है? अभी भी ईगो पे है, ईगो सेंटर्ड है। Ego center is always based on fear because it is all on temporary things. It is going to go. थोड़ी सी और अगर अवेयरनेस बढ़ जाएगी उसकी तो वो फोर्थ चक्र पे आएगा, which is अनाहत चक्र, हार्ट चक्र. Now there is some respite because he is experiencing a little bit of detachment here, unconditional love, forgiveness, gratitude. स्पेलिंग और मतलब सीखेगा वो. अब उसको थोड़ी सी राहत मिलेगी, थोड़ा सा पीस मिलेगा, थोड़ा सा जो बोलते हैं थोड़ी सी शांति तो मिल जाए, तो अब वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस करेगा वहां. क्यों? अभी तक तो वो दलदल में था, अभी दलदल के बाहर निकला, अभी थोड़ी सी अच्छी सांसें ले पा रहे हैं. That is an heart chakra, and the more you stay in an heart chakra, the heart chakra, you will experience unconditional love. अवेयरनेस डिफरेंट होगी उस बंदे की, बिल्कुल होगी ना. अब स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहा है वो, अनकंडीशनल लव के अवेयरनेस में आ गया है, हिज अंडरस्टैंडिंग इज देयर. पर्पस ऑफ लाइफ चेंज हो गया, हुआ कि नहीं? जो रूट चक्र में है और जो हार्ट चक्र में है, पर्पस ऑफ लाइफ डिफरेंट होगा उसका, वो खुद डिक्लेयर करेगा ना फिर. तो एक पर्पस ऑफ लाइफ हमारे ह्यूमन बीइंग का बाय डिजाइन है, जो क्रिएटर ने बनाया है, और एक हम अपनी फ्री विल और अवेयरनेस से लेते हैं. दैट इज व्हाट आई वांटेड टू ब्रिंग द बेसिक डिफरेंशिएशन इनटू योर माइंड. नाउ यू हैव टू सी वेयर यू आर. मैं इसके ऊपर इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इसके ऊपर शायद बहुत कम लोग होंगे. हाँ, थोड़ा सा बता देता हूँ वैसे उसके आगे भी. द फिफ्थ चक्र इज द थ्रोट चक्र, which is complete self-expression. You will be a great speaker. You will be fully self-expressed. आप सत्य और धर्म के मार्ग पे, सत्य अहिंसा के मार्ग पे चलने के पुजारी बन सकते हो. So you will be even worshipped like a महात्मा. Non-violence and truth के पुजारी अगर आप बन जाओगे तो आपको महात्मा बना के लोग पूजने भी लग जाएंगे. You can become the father of the nation also. हाँ, पॉसिबल, यस पॉसिबल. तो ये थ्रोट चक्र का कमाल है, ठीक है जी. सो बट स्टिल दैट इज स्टिल विद इन दिस यूनिवर्स, इसी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं. उसके बाद अगर आप थर्ड आई चक्र तक जाते हो, वेयर यू एक्चुअली हैव द ग्रेट विजन, इंट्यूटिव पावर्स आर द बेस्ट, राइट? देयर यू हैव सेल्फ रियलाइजेशन. And when you go to the highest chakra, which is the crown chakra, that is unity consciousness, where you attain God realization. The purpose of life at the root chakra and the purpose of life at the crown chakra will be totally different. Right or wrong? Correct. That is why self-realization is important. क्योंकि अगर आपका रूट चक्रा पे 5% का विजन दिख रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग 5% की है, तो क्राउन चक्रा पे 100% की अंडरस्टैंडिंग है. जब अंडरस्टैंडिंग सही होगी, when you get the right understanding, only then you will be able to do the right living. तभी आप अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही पहचान पाएंगे, तभी आप सेल्फलेस सर्विस करके कंट्रीब्यूट कर पाएंगे. मेकिंग सेंस? दैट इज व्हाई सो मच इंपॉर्टेंस टू सेल्फ रियलाइजेशन. कि अपने आप को पहचानो तो सही, तभी तो आप अपने रियल नेचर को पहचानोगे, तभी तो अपने रियल नेचर को एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस करोगे, और तभी आप दुनिया में कुछ कंट्रीब्यूट करने लायक कुछ काम करोगे. Then you are fulfilling the sole purpose of self-realization, plus you are also fulfilling the highest living that you can think of. क्योंकि आपकी हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग है, राइट एंड रॉन्ग की बात नहीं है, हाईएस्ट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ लिविंग है. दैट इज धर्म. Now all of you can connect with what dharma is, right or wrong? आई बात समझ में? Yes, so let's have some people share, क्योंकि ज्ञान इतना ही है. Why self realization is important, that is what I wanted to tell you, so that you get your purpose of life not from root chakra or the lower chakras, but from the highest level of understanding which is possible, which is the level of understanding of divine, which is God's understanding. And then live a life
which you will be proud of, a divine life. Have divine understanding, have a divine life. In short, become an avatar. That's what I'm telling you. That is the purpose of life. सेल्फ रियलाइजेशन के बाद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, खत्म नहीं होती है. सेल्फ रियलाइजेशन के बाद समाधि लेके जाना नहीं है. सेल्फ रियलाइजेशन के बाद वापस आना है इस दुनिया में और दुनिया को बदलना है. That is the purpose of life. Yes. So now all of you can have some insights and share. Yes. You want to share? Tony, you wanted to share? I just wanted to ask you, when you described dharma in one sentence, what exactly did you say? I literally didn't get it. Oh, I will have to. I have no clue what I have said, Tony. So you will have to tell me what I said. Then I can correct it possibly. Anybody who remembers what he is talking of? I think, hi Amit here. I think in nutshell, last time we discussed kiya tha, I think that stage of Sat Chitanand or bliss, which ultimately can lead to moksha, that is the dharma of human beings. Correct. To be able to reach Sat Chitanand, Absolutely. bliss, moksha, nirvana, these four words can be interreplaced. Am I correct? Absolutely right. Absolutely right. That is the basic nature. So what possibly, if this is what Tony, what I said? No, I don't think No. so. Okay. So one way of understanding is, I'll just try to summarize whatever I have said, and then you can ask your questions. Yeah. One way of understanding is, every human being has this intrinsic nature of Sat Chitanand. Everybody clear? Yeah. परमात्मा का नेचर यही है, सोल का नेचर यही है, यही हमको अटेन करना है. Number one. Number two, before you attain this, obviously you will be doing something, right? So that is why I told you the different levels of understanding. अलग-अलग level की understanding है हमारी, because we have free will and we have different level of awareness from which we are moving forward. So you can have very, very small purpose of life. Like, you know, my job, my purpose of life is to survive, or my purpose of life is to acquire wealth. My purpose of life is to enjoy life. So all these different understandings will give you a different purpose of life. But the highest level of understanding is when you attain the highest level of consciousness, which is Sat Chitanand, realizing who you are, and then experiencing and expressing that basic nature in whatever you are doing. That will be the purpose of life. So एक purpose of life by design बना हुआ है, एक purpose of life आप choose करोगे. So purpose of life is dharma. That's what I'm saying. Dharma can be said as the purpose of life, but that purpose of life will be different at different level of understanding. So highest level of understanding and highest level of living, that is the highest form of dharma for an individual, right? That is what I said, possibly, if that is what you wanted to know. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Good. Anybody else? Yeah. I feel all the lives that we've lived, and if you, whatever you shared, somebody wants to become a leader, somebody wants to be in love, relationship. I think the basic undercurrent to all the desires is basically happiness. And as a human, we keep trying every way to find true happiness, and knowing very well that, okay, becoming a leader is not the true happiness, and relationships is not true happiness, and money, power, all the trials and errors that we keep continuing with is not the true happiness. So our journey continuously keeps seeking for the truest of happiness, and ultimately, when out of all the separateness that we keep experiencing, once we completely unite and completely come to oneness, and that's when the journey ends. Even the spiritual journey is basically to seek happiness only, but ultimately you realize you have always been that. That's when the journey ends. So it's actually a very perfect design that the God has created. So वो अपने आप ही होता ही रहता है. Absolutely perfect understanding, Leslie. Very good. Only two things I would like to correct there. एक तो happiness की जगह bliss बोल लो. वे सत चित आनंद है ना, तो आनंद को bliss से ज्यादा equate करते हैं. Number one.
And number two, that is not the end of the journey, that is the beginning of the spiritual journey. Self realization के बाद आप क्या करोगे? आपकी जर्नी तो हो गई complete. Now you have to contribute to society in a selfless manner. That is where will be the purpose of life. तो एक individual purpose of life है to experience your basic nature of Sat Chit Anand or bliss, what you said. And second is, when you are expressing that, now take up a project or something big where you can contribute to humanity in a big way. That is the ultimate purpose of life. तो सेल्फ रियलाइजेशन के बाद आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती. Consider this. Shashi, I want to ask you a question. Yes. This is actually what I have read. So I have not. This is not as an experience. Is that what I've learned and what I've read is there are many enlightened souls that have reached their final destination and they've reached the union and they've become mukt, and that is the place. Once they reach that position or realization, that is when I think by their own past vasanas or whatever, they kind of choose, okay, now I would like to contribute. And some people choose just to be into that bliss and not so much working towards, like doing welfare for the society and the world. This is what my understanding is, because they reach an understanding of that the world is perfect. You don't need to do anything to anywhere. This is what my understanding is. So some people choose to contribute back to the society. Some people, once they reach, they said, okay, fine, everything is perfect, everything is God, so I don't need to do anything. I'm just living in bliss. Yeah, so different levels of perception. That's what I said. If you are at the crown chakra consciousness, obviously you will not do anything. You will be in samadhi. तो samadhi state में आपको जाना पड़ेगा उस लेवल को पहुंचने के लिए. But उस लेवल तक पहुंचने के बाद रहो वहां पे, मे बी एक आध जन्म बिताओगे वहां पे, right? After that, you will come back as a Jivan Mukta, live a life from your third eye chakra, and then contribute to society. That is the divine plan. So you will do that. If not in this lifetime, you will do it in the next lifetime. But you will do it. That is a desire, divine design. You can't escape that. It is part of the project. It is part of the game. Welcome to the game. Can I add by saying that, after the self-realization, the next level where we're talking about upliftment of and spreading of consciousness to others. So that is called self-actualization. Absolutely. Self-realization and self-actualization, and the both are the ingredients to be able to reach Sat Chit Anand, bliss, nirvana, or moksha, whatever. So the purpose of life may have these two steps. I don't know, maybe I'm not using the best of the words, but after reaching realization, right. Absolutely right. See, you have to understand this way. Crown chakra consciousness or unity consciousness is self-realization, and third eye chakra consciousness is self-actualization. If you look at it that way, जिसको हम self-realization और God realization बोलते हैं, आप उसको वैसे भी मान सकते हैं. क्योंकि अगर आप वापस आके कुछ कर रहे हैं, वापस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप क्राउन चक्रा से वापस थर्ड आई चक्रा में आ रहे हैं. क्राउन चक्रा में तो आप समाधि स्टेट में है ना, you can't do anything. Correct. जैसे आप कोमा में हो अगर, तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते ना. वैसे समाधि स्टेट में you can't do anything, but you are in bliss. You are absolutely blissful. Yeah. But then you come back to the normal senses in third eye chakra, and then you, with that intelligence, with that wisdom, with that understanding, and with that divine purpose of life, now you contribute to society. That is self-actualization. And I think this second part, which is the movement from the realization to the self-actualization state, why is it also required is to, if we believe in the theory of karma. So when we say karma clear karne hai, repaying reconciliation karna hai, so all that can be done either by karam yoga or jnana yoga or bhakti yoga. So karam yoga, which means doing things for others, for the betterment of others, is required to be able to clear those karmas. Absolutely. Onward journey में ये सब चाहिए होगा, ये चारों योग चाहिए होंगे, तभी आप सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचेंगे. उसके बाद जीवन मुक्ता बन के आप जो मर्जी करिए ना. Then you are an avatar. Then you are an avatar. Then you choose which avatar you want to be. You want to take up the Krishna avatar, or you want to take up the Rama avatar, or you want to become a Jesus. So that is your choice. आप miracle healing कीजिए ना. You take in the name of Jesus or by the power of the Christ consciousness, you do miracle healings. Or you can lift the Govardhan Parvat. Choice is yours.
But once you are there, you will do something magical and miraculous. That is clear. So the understanding kya hai? The highest form of dharma is the highest level of understanding and the highest level of living. Mark these two words. Highest level of understanding honi chahiye or highest level of living honi chahiye. That is dharma. I'm not saying right way of living. I'm saying the highest level. Highest level means when you are actually thinking like divine, acting like divine, behaving like divine, where you are one with the divine. Correct? वो डिसीजन एट आफ्टर सेल्फ रियलाइजेशन, वो एक्शन कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता है? मतलब लाइक हम लोग हर चीज जो भी करते हैं वो डिजायर के फॉर्म में करते हैं. वंस वी आर कंप्लीटली इनटू द सेल्फ रियलाइजेशन या मुक्त हो जाते हैं, तो ऑल आवर डिजायर्स आर कंज्यूम्ड या वी अंडरस्टैंड, तो वो जो एक्शन निकलता है उस टाइम, वो कहाँ से आता है? आप धर्म की स्थापना के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे. आप कब पार हुए ना? बाकी दुनिया तो वहीं पे है. 800 करोड़ लोग हैं. अगर आप 10 लोग या आप एक आदमी सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, पर्पस खत्म हो गया क्या वर्ल्ड का? यूनिवर्स तो चल रहा है ना, सोसाइटी चल रही है ना, सोसाइटी में अभी भी वायलेंस है ना. तो अधर्म को नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार दोबारा प्रकट होंगे. What Tonichi is asking, I think the answer lies in calling. There will be a natural inside calling. तो वो वहां से निकलेगा जब भी होगा रियलाइजेशन के बाद. सोसाइटी की नीड को देखते हुए, see, I don't know whether you are aware of that भगवत गीता कोड, यदा यदा हि धर्मस्य. अगर वो आप कोड पढ़ोगे भगवत गीता का, बहुत क्लियर है. जब जब धर्म की हानि होगी तो अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतरित होऊंगा. This is the divine words, right? So now I'm not saying that the God is going to come and incarnate. You become God and then you take on incarnation and then you decide your purpose of life. That's what I'm saying. तो आपको वो प्रोजेक्ट आ जाएगा, उस अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचोगे, आपको कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट मिल जाएगा जिससे आप कंट्रीब्यूट करना शुरू करोगे. But right now you don't have to wait till then. Right now you see what you're good at, what you're passionate about, and see how you can contribute to people. That is what we are all doing, right? जो spiritual journey में है, he will be contributing to others. So keep doing that till you get better visions and till you get the highest level of understanding. अपने लेवल पे जो contribute कर सकते हो करो, जो आपका पैशन है, जो आपके स्ट्रेंथ हैं. So how do you apply this law of dharma in your life? That is what we are going to look into the next level. आज की सिर्फ understanding था. अगले next week we will continue the discussion and we will see how do we apply this law of dharma in our life. That means how do you design your highest level of purpose and how do you contribute to people in your life and how to take a big project. So that can be one discussion that we can have next week. Yeah. तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट बड़े होंगे वैसे वैसे आपका पर्पस ऑफ लाइफ एक्सप्रेशन में आएगा. Yes, anybody else who would ask any questions, because we have just overshot the time. So we'll close the session in another 2 minutes time. Meanwhile, any questions from anybody? Yes, Tony, go ahead. Yeah, so what I've just understood, that every human soul, every soul. So you're talking about the entire universe, the entire planet Earth. जितने भी human beings हैं, they are all going to go through this cycle and reach self-realization and attain moksha and then do whatever has to be done. So you mean to say each and every soul is going to do all this? Each soul will go through that journey as per their sanskars and as per their karmas and as per their speed. There is no compulsion. Okay. जो जहाँ पे रहना चाहे वहीं पे रहें, कोई दिक्कत नहीं. नहीं, लेकिन जो जहाँ पर रहे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जो अगर पीछे अल्टीमेटली वहीं तक पहुंचेंगे. अल्टीमेटली मोक्ष अगर मिलना है या इस बर्थ एंड डेथ के साइकिल से मुक्त होना है तो सेल्फ रियलाइजेशन मिलना ही है. So that is applicable to each and every soul born on yes, this planet. That is the journey of every soul. Yes, that is the right understanding. Okay. Yeah. So whether every soul is going to contribute to the society, that is your choice.
that, as Leslie said, is a choice, but that is a part of the divine game. Few souls will be selected who are enough. बहुत ज्यादा अवतार नहीं चाहिए ना, 2-4 अवतार काफी हैं। 800 करोड़ के लिए 8 अवतार भी होंगे तो बहुत है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। अभी तो कितने अवतार आए अगर आप बात करो अपने शास्त्रों के हिसाब से, या वैसे भी बात करके देख लो, हर रिलीजन में एक ही अवतार आए हैं ना अभी तक तो, सिर्फ हिंदूज में थोड़े से ज्यादा हैं। क्योंकि हम एक अवतार की बात सुन के राजी नहीं होते, हमको 10-10 चाहिए। तो राम जी सिखा गए नहीं माने, कृष्ण जी सिखा गए नहीं माने, अब कोई और आगे सिखाएंगे। हाँ, बाकी सब एक अवतार से मान जाते हैं। हाँ, तो क्राइस्ट। So do you think Sai Baba, Shirdi Sai Baba and Kabir were also avatars? Every human being has the potential to become an avatar, and I am nobody to judge anybody. I know who I am and what I am doing. But yes, if you ask me, Sai Baba is the avatar of miracle healings. Yes, very right. ज्ञान योग के अवतार हैं, कर्म योग के अवतार हैं, राज योग के अवतार हैं, और भक्ति योग के अवतार हैं। हर चीज में जहां पे आप चरम सीमा को पार कर जाएंगे, आप अवतार बन जाएंगे। Yes, yeah. So you can think of what motivates you, which kind of avatar you would like to become, and move on your journey. अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाओ। Okay, आज जो बिल्कुल नहीं बोले हैं, I will extend for another 2-3 minutes. जिन्होंने आज कुछ भी नहीं बोला है, संजीव, your take on the discussion today. Let me first give the choice to Sanjeev. Yeah. Thanks, Shashi, and it was a lovely discussion, and the way you have explained this law of dharma, that highest level of understanding and highest level of action is the dharma. That's a real great take, and that brings to a very, very, very clear understanding that if I understand that what is my highest level of action and understanding, if I know about it, then I'll actually follow my dharma. Otherwise, I'll keep on slipping down again and again and again. And that's where we can actually, if we can control our awareness about that level of understanding, then we actually start avoiding sufferings. Because ultimately, the pain is inevitable, but suffering is a choice. So if I know, I'm aware my highest level of understanding and action, and I keep myself, I can maintain there, I can get free of sufferings or reduce my sufferings. That Perfect. means I can be more in a bliss state. That's what I'm saying. Thank you very much for this awareness today. Thank you very much. Very good understanding and बहुत बढ़िया समझाया संजीव. Thank you very much. Yes. Anybody else who would like to share? Fast. जल्दी से. Yes, अनीता जी, कुछ नहीं बोला आपने, जल्दी से बताइए. अनीता जी, शायद लगता है उनका नेटवर्क अटक गया. Anybody else who would like to share? Minu ji, what's your takeaway? Oh, my recording has gone. जो मिलना है, जो हम लिखवा कर आए हैं, वो तो हमें मिलना ही है, लेकिन मेन जो हमें मेहनत करनी है ना, वो ये स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलने में ज्यादा मेहनत करनी है, जो अपनी सेल्फ रियलाइजेशन की ओर आगे बढ़ने के लिए वो हमारा मेन सब्जेक्ट है, जिससे कि हम लोग आगे मतलब जिस पे हम पूरा ध्यान नहीं देते और आगे पीछे की बातों में लगे रहते हैं. ये मैंने शेयर करना था. थैंक यू. हाँ जी, अनीता जी, सिंपल वर्ड्स में अगर बोले हिंदी में, तो आज जो धर्म का उन्होंने मतलब हमको समझाया है, उन्होंने ये समझाया है कि हम लोगों के पास, सबके पास यूनिक एबिलिटीज होती हैं, कोई ना कोई टैलेंट होता है, कोई पैशन होता है, जिसको हम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये उनका कहना था. ओके. So thank you अनीता जी. क्योंकि मैंने क्लास ज्वाइन लेट की थी. Am I audible? Okay. हाँ जी. Good.
So sorry for the disconnection. Anita ji, आपने जो share किया मैं नहीं सुन पाया, but I hope everybody else listen to it and participate. So thank you very much for that. And Minu ji, आप कुछ बोल रहे थे, so if you can just sum up that. Yes. हाँ जी, अनीता जी का था क्वेश्चन कि वो थोड़ा लेट ज्वाइन हुई थी, तो उनको धर्मा का थोड़ा इंग्लिश में जितना कुछ ज्यादा तरीके से समझ में नहीं आया, तो वो हिंदी में समझना चाहती थी, इसीलिए मैंने वो बोला उनको कि धर्म का क्या मतलब आपने समझाया है और किस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए वो। ओके ओके ग्रेट। तो अनीता जी क्लैरिटी मिली आपको? I think we lost her again. Yes. Yeah. Okay, good. Great. Anybody else who would like to share? We have already exceeded by 10 minutes, so I would like to close the session now. Anybody else who would like to share? Neeta ji, आपने भी कुछ नहीं कहा आज? Anything? What are you taking away? सर आज बहुत अच्छा चीज जो आपने बताया है, पर्पस ऑफ लाइफ, and I could completely relate that with myself and why I feel very happy when I'm doing that. तो वो बहुत अच्छी खूबसूरत चीज आपने बताई है जिसको मैं अब बहुत खुशी because it used to be like thinking why it makes me so happy when I'm working and when I'm doing that. So okay, I could get it. That was my purpose of life, where I was able to contribute to others also, giving them peace and satisfaction, happiness. तो वही शायद वही मेरा पर्पस है। बहुत खूबसूरत चीज था सर आज। So a round of applause to everybody for a wonderful participation, and with this commitment that next week we are going to continue this discussion and see how we can apply this law of dharma in our life right now, wherever you are, जिस मर्जी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे हो, हम लॉ ऑफ धर्मा को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग बोल रहे होंगे जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं आएगा तब तक तो लॉ ऑफ धर्मा मेरे लिए कोई काम नहीं करने वाला। ऐसा नहीं है, इट वर्क्स फॉर यू इवन राइट नाउ, क्योंकि आप जो कर रहे हो, कोई भी एक्शन आप कर रहे हो वो कर्मा है, और वो क्यों कर रहे हो वो एक्चुअल में पर्पस ऑफ लाइफ है, आपका धर्मा है, बिकॉज इट टेल्स यू व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। यू शुड बी वेरी क्लियर व्हाई यू आर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। क्या कर रहे हो कर्म है, क्यों कर रहे हो वो धर्म है। अगर यहाँ से समझ ले हम तो ऊपर जाना आसान होगा, तो असली अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और वो हम अगले हफ्ते कंटिन्यू करेंगे। यस, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। थैंक यू वेरी मच। Enjoy a great day, enjoy a great week, and let's join next week again. Thank you. God bless. Thank you, Shashi. Thank you. Bye.